अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एनालाइज अ पोएम। इसके पहले हमने पढ़ा कि हाउ टू स्टडी अ ड्रामा, हाउ टू स्टडी अ नावल, हाउ टू स्टडी एन एरा इन जर्नल, ठीक है जी, एंड इन स्पेसिफिक एज वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एनालाइज अ पोएम। तो हम ये किसी ख़ास स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बारहा बताया है कि इफ़ यू हैव टाइम एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएस इंग्लिश lectureship or a competitive exam, you can study like this. So same goes for it. Like, this is my point of view. You may differ from it, you may not, but that's how you should study it. ठीक है जी. So how to analyze a poem? First of all, generally 3 readings are required to study a poem. How many readings are required? 3 readings are required for studying a poem. 3 readings पहले तो जस्ट एक रीड दे दे. सेकेंडली, जो सेकेंड रीडिंग में आपको उसकी पोइम की टोन पता चल जाएगी. इज़ इट अ हैप्पी वन, इज़ इट सैड वन, ठीक है जी. इन द थर्ड वन यू विल कम टू नो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द पोइम, ठीक है जी. तो अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 4 to 5, तो इसके अलावा और भी हो सकते हैं, एंड यू कैन डू कमेंट इट सो अदर पीपल कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट एज वेल. So the first one is that determine the form and meter. आपने जब एक पोएम स्टडी नहीं, रीडिंग दे दी उसको, तो you will know its form. Like, some poems are objective, some are subjective. And what are the difference between these two? The objectives are the ones in which the poets talk about other things instead of himself, while in subjective he talks about his own feelings, his own emotions. Okay, so what kind of nature and meters? There are 5 different types of meters, like iambic pentameter, iambic pentameter, iambic tetrameter, dactyl, octosyllabic. These are different types of meters. I have already made a video on this. I'll link it in the either I section above or at the end of the video. I will link it. Okay, तो simple poem भी हो सकता है, and it could be a gloomy one, anything. Then you have to check out the rhyme scheme, ठीक है जी. What is the rhyme scheme of a poem, ठीक है. And हर एक स्टेंजा की different rhyme scheme होती है. In the next video I'll take a poem and discuss it with you guys in reference to these points, ठीक है जी. अच्छा जी, point out the different figures of speech. As you know, figures of speech जो होते हैं वो हर एक पोएम में भी होते हैं, एक ड्रामा भी होते हैं, एक नावल में भी होते हैं, ठीक है जी. तो what are some of the common figures of speech? Some of the common figures of speech are simile, personification, metaphor, allegory, and it's the sensuousness. And sensuous is, although not a figure of speech, but then we have imagery as well, we have alliteration, we have onomatopoeia, we have oxymoron, we have antithesis. Okay, also you have to look for the historical background, ठीक है जी. What is the historical background of a poem? Then what is the type of stanza form? Like, is it a lyric poem, is it an epic poem, is it an elegy, ठीक है जी. ओके, मैंने जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ली हुई है इन जनरल, मैंने वैसे अपने साथ 2-3 पॉइंट्स लिख लिए हैं. अगली वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल में वो स्टडी करूँगी, ठीक है जी. तो मैंने जो एग्ज़ाम्पल ली हुई है यहाँ पे वो है पोइम I wandered lonely
एज अ क्लाउड। ठीक है जी। एंड दिस पोएम इज फेमसली नोन एज डैफोडिल्स। डू यू नो हु हैज written this poem? Who can tell me? Okay, it's written by daffodils. This poem daffodils is written by विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है जी। ओके, तो अब अगर हम पहली रीडिंग दे दे, फिर सेकंड रीडिंग दे दे और थर्ड रीडिंग दे दे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये डैफोडिल्स जो पोएम है ये किस नेचर की है। इट्स काइंड ऑफ अ सिंपल वन। इट्स अ सिंपल पोएम इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ डिस्कस्ड नेचर। What kind of meter does it have? It has iambic pentameter. What kind of meter has been used in the poem Daffodils by Wordsworth? It's the iambic pentameter. So what is the rhyme scheme of the poem? जब भी आपके पास एक पोएम सामने पड़ा होगा तभी आपको उसके राइम स्कीम का पता चलेगा। ठीक है जी। और इस पोएम में हर एक स्टेंजा जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेंजा है। हाउ इंडिपेंडेंट स्टेंजा है कि इसका हर एक स्टेंजा एक अलग मतलब देता है, एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं बल्कि उसके अलावा भी इंडिपेंडेंटली मीनिंग देता है। एंड व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ वन ऑफ इट्स स्टेंजास? इट्स ए बी सी सी। और अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि राइम स्कीम का आपको कैसे पता चलेगा कि इज़ इट ए, इज़ इट बी, इज़ इट सी, इज़ इट डी, इज़ इट ई और इज़ इट एफ। ठीक है जी। देन पॉइंट आउट द डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इन अ पोएम। सो सम ऑफ द फेमस figures of speech used in the poem Daffodils is simile, personification and imagery. अब different of figure of speech पे भी मेरी वीडियो है, मैं वो इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक या फिर आपको आखिर में मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम? अच्छा जी, एज यू नो about Wordsworth that he was one of the romantic poets and he lived in the Lake District. ठीक है जी। सो ये इसका जो बैकग्राउंड हुआ है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट when William Wordsworth along with his sister came across long belt of daffodils in the Lake District. ठीक है जी। एक बार जो ये इसकी बहन है वर्ड्सवर्थ की, ये और इसकी बहन लेक डिस्ट्रिक्ट में लेक किनारे चल रहे थे तो उनको लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स दिखाई दिया। ठीक है जी। एंड दैट्स हाउ विलियम वर्ड्सवर्थ रोट दिस पोएम। ठीक है जी। Then what is kind of stanza is used in this poem? So it is a lyrical poem and it has 4 stanzas and each stanza has 6 lines each. ठीक है जी। What kind of poem is this? The I Want Is Lonely as a Cloud or famously known as Daffodils. It is a lyrical poem and it has 4 stanzas. ठीक है जी। And each stanza has 6 lines each. And total of how many lines does दिस पोएम हैज़? इट हैज़ 24 लाइन्स। ठीक है जी। ये तो एक जर्नल व्यू हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगी कि किस तरह हमने उसके डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच देखने हैं, उसके डिफरेंट राइम ऑफ स्कीम्स देखने हैं, उसकी नेचर देखनी है। ठीक है जी। दैट्स हाउ वी विल लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय channel and listening to me. We'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.